Hi Queens! वेलकम एवरीवन टू द इंस्टाग्राम लाइव। और आज हमारा इंस्टाग्राम लाइव बहुत ही अलग किस्म का है क्योंकि हम क्वीन इन द मेकिंग के प्लेटफॉर्म पर पहली बार है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव इनवाइटेड एन एक्सपर्ट एंड शी इज नन अदर देन रिद्धि दोशी। रिद्धि बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, उनके साथ साथ आप समझ सकते हैं क्वींस कि मेरा किस हिसाब का ट्रस्ट होगा, फेथ होगा रिद्धि पे, दैट आई हैव इनवाइटेड हर एज एन एक्सपर्ट टू टॉक टू यू ऑल। रिद्धि एक बहुत ही सुलझी हुई पेरेंटिंग कोच हैं, साथ ही साथ वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और रिन्स एकेडमी के नाम से उनका एक पूरा का पूरा इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, चलती है, जिसकी वो फाउंडर डायरेक्टर हैं। एक एम्पावर्ड वुमन होने के साथ साथ रिद्धि इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग हु अंडरस्टैंड्स the essence of womanhood and she understands motherhood all the more। and आज वो हमारे साथ हैं। हम लोगों के बहुत सारे सवाल जो हमारे दिमाग को बॉगल करते रहते हैं सारा टाइम, जब मैंने फॉर दैट मैटर इंट्रोड्यूस किया आज इंस्टाग्राम पर स्टोरी के थ्रू एंड पोस्ट के थ्रू कि रिद्धि के साथ हमारा ये मीटिंग है, हम लोगों का ये डिस्कशन है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने शेयर किए हैं पेज के ऊपर कि मैं अब सारे के सारे क्वेश्चंस चाहे हम ना ले पाए लेकिन हम बेसिक क्वेश्चंस जरूर उनके साथ डिस्कस करेंगे। रेखा, शोभित, साथ में सोनल, हाय अमित, हाय एंड सना, भूमि, रुचि, उप्रेती, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे क्वींस जुड़ती चली जा रही हैं एंड सो आई विल जस्ट कॉल अपॉन रिद्धि, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ओके, सो आई एम श्योर कि वो जल्दी से एड ऑन हो जाएंगी। Okay, yes. Hi Riddhi. Hi, how are you? I'm good. Thank you so much. Okay, wonderful. So, Riddhi, can you say a few words again? We were not able to hear you before. I'm good. Thank you so much, Shivangi, for having me here. Okay. Right, so now I can hear you. And मैंने देखो थोड़ा माहौल बनाने के लिए पीछे stuffed toys भी रखे हैं, which are my favorite. I love Huggables, and it's so wonderful to have you over, Riddhi. हम लोग usually मिलते रहते हैं, but to meet up like this, and you have been kind enough to share your expert advices and your suggestions for all the mothers on the board, right? So, Riddhi, would you like to tell something about yourselves before we start with the questionnaire? Sure. So hi everybody. I'm Riddhi Doshi Patel, a child psychologist and a parents coach. Why I say a parents coach? Because I handhold parents in their journey of parenting. पेरेंटिंग ऐसी चीज है ना कि जिसके साथ मैनुअल नहीं आता है, तो कभी कभी हमें हेल्प लेनी पड़ती है एक्सपर्ट से। अदरवाइज सब चीज के साथ मैनुअल आता है, तो एवरीथिंग इज वेरी इजी इन लाइफ एक्सेप्ट पेरेंटिंग। Albeit it is a very interesting journey because you create lot of memories with your children. So it's very important that you create memories, you bond together, and you have a wonderful parenting journey as well. Wow, wonderful. तो मैं यही कहना चाह रही थी। रिद्धि ने बहुत प्यारे तरीके से पहले ही बोल दिया कि कोई भी पेरेंट्स परफेक्ट पेरेंट्स ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रिद्धि जो काम कर रही है वो हमें सहूलियत देती है, वो हमें हमारी इस जर्नी को, जो हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स और टफ स्पॉट्स हम लोग देखते हैं अपनी इस जर्नी में, उनको थोड़ा सहजता से हम लोग क्लियर आउट कर पाए। इसीलिए आज का हमारा ये सेशन है। So we'll start, Riddhi, without taking much time. So there have been loads of questions. जैसे ही क्वींस को पता चला कि रिद्धि आ रही है and वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, so there have been like loads and loads of questions, but we'll choose the basic ones. So the first question goes like, of course, adolescents, teenagers, ये बहुत ही गंभीर स्टेज होती है किसी भी चाइल्ड और उसके पेरेंट के लिए भी। So adolescents में कई mothers complain करती हैं that their children they start misbehaving. You know, they show
traits of their behavior which they haven't been showing till now. Suddenly there is a change, they show their independent self. वो एकदम से छोटी छोटी बातों पे चिढ़ के जवाब देते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े डायलॉग बस यूं ही बोल जाते हैं अपनी मदर्स को, एंड देन मदर्स रियली गेट अपसेट कि अरे मेरा बच्चा ये बोलना कब सीख गया. सो हाउ टू create a cordial bond between you and your child during that typical adolescent, those typical adolescent years, that is maybe say 13 to 19, we'll take the teen years. तो कैसे उस बॉन्ड को मेंटेन करें या उसे क्रिएट करें और फिर उसको इस तरीके से शेप अप करें कि वो ताउम्र एक अच्छे बॉन्ड की तरह चलता रहे. So Shivangi, it is very important for all parents to know that when a child starts reacting at any age, if a child starts reacting, it is important that we understand that when we have stopped the child from asking questions, connecting with us, we have always judged them. Yes, it's gone. Yeah, now it's fine. Yeah, please. We could hear the ringtone. Yes, I'm so sorry. It's a WhatsApp call. Somebody's trying to reach me. Yeah, right. Okay. Please go ahead. Yeah. So I was saying that when a child reacts at a particular age, it is important for the parents to understand कि हमने तब तक इनको इतना जज किया है, छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट किया है, छोटी छोटी हम लोगों ने उनको स्टॉप करके रखा है. So we have not made them understood the responsibilities or consequences, but we have stopped them without explaining. Is where then they feel that they have a little freedom. When they see their friends doing it, they tend to copy the same and react in a homely structure, the home structure. Mm-hmm. So when this is the situation, it is very important for the parent to sit and have a family time with the child and talk. That I understand that there are few times I had reacted. I understand कि कभी कभी मैंने तुमको नैग भी किया है, कभी कभी मैंने टैग कर दिया है, तू ऐसा है, तू ऐसी है. But अब मुझे लगता है that you are grown up and you are mature enough to understand that we can make everything better now. So nonetheless, जो चला गया, जो finish हो गया, it's okay. But now we can concentrate on this, right? But the parents who are at an early stage, like we are talking about the teens and adolescent, right? So it's good to create a bonding with them, consider them as friends, but don't be a friend to the child. Be a friendly parent to the child, okay? Because friends इनके पास बहुत रहेंगे. They need a parent. So let them talk to you, let them come back and even share their mistakes, their wrongdoings, anything they have done. Give them space to talk, discuss and share, okay, without being judgmental. Again, the parents whose children are at younger age, see that you don't repeat any of this thing. जो कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत एक अच्छा सा माहौल रहता है, एक अच्छा सा बॉन्डिंग रहता है आपको और आपके बच्चे के बीच में. And you don't have to think that my child is, or you don't have to emphasize on, or you don't have to give importance to think that मेरा बच्चा react कर रहा है कि ये कर रहा है. वो कभी situation आएगी ही नहीं, because a child gets irritated when the child is constantly nagged, or his things or his situations or his mistakes, or somewhere where he is not performed well, you have reacted as a parent, you have judged and you have compared. तो अगर आप ये चीजें ध्यान में रखें तो आप एक बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ, स्पेसिफिकली टीन के साथ कर सकते हैं, बिकॉज ये जरूरी है. और दूसरा कि अगर जब आपको लगे कि आपका टीनेजर्स और लेट अडोलसेंट दे आर ट्राइंग टू रिएक्ट, दे आर ट्राइंग टू से समथिंग टू यू विच इज नॉट करेक्ट, ओके, इमीडिएटली रिएक्ट ना करके उसको अलग तरीके से थोड़ी देर के बाद बात करिए. सो यू बाय टाइम एंड देन डिस्कस इट ऑफ विथ योर चाइल्ड. Also, it is important that by 10 to 11 years of age group, you start involving your child into daily chores of life, in your family matters, in terms of, but everything age appropriate. आप कुछ डेकोर चेंज कर रहे हो, बच्चों को इन्वॉल्व करो. आप कुछ मेन्यू कर रहे हो, कुछ नाश्ता बना रहे हो, सब चीज में इन्वॉल्व करना. You need to make your child feel responsible and also make him feel that you are a part of the family and not that आप एक
अलग पेडिस्टल पे हो और हम पेरेंट्स है और आप कुछ नहीं हो. So the time you start involving the child, this relations or this situation will never occur. Okay, so that's a very nice point. क्योंकि इन्वॉल्वमेंट का असल मतलब हम लोग कई बार जान ही नहीं पाते हैं रिद्धि कि इन्वॉल्वमेंट क्या है. Absolutely. एंड आपने अभी अभी अपने टॉक के दौरान ये कहा कि आप एक फ्रेंडली पेरेंट बन के रहिए रादर देन अ फ्रेंड. एंड शायद यहीं पे एक कंफ्यूजन आती है ज्यादातर मदर्स की लाइफ में, बिकॉज हम लोग जज नहीं कर पाते रिद्धि. मतलब देखो, मैं भी एक माँ हूं, मैं आपसे अपने मन की बात कह रही हूँ. मैं जज नहीं कर पाती कि वो बाउंड्री कहाँ है जहां मैं एक फ्रेंडली पेरेंट हूं, या इसके आगे भी अगर मैंने अपने बच्चे को अलाउ किया अपने बिहेवियरल टैंट्रम्स में आगे बढ़ जाने के लिए, या मुझसे इतना ज्यादा खुल जाए कि वो कुछ अजीब सी बात मुझसे करने लग जाए. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वेयर दैट बाउंड्री लाइज. when do we actually cross that line of being a friendly parent to just being a यार एंड दोस्त टू अ किड? तो उसको थोड़ा सा इलैबोरेट आप कर पाएंगे रिद्धि कि क्या वो रहता है? जी. Sure. So there are two different things what we are trying to combine at the moment. When you say a parent is somebody who disciplines a child. A parent is somebody who supports the child physically, mentally, emotionally, and financially. Okay. Jabki you talk about a friend is a person who gives a very non-judgmental space to the person, a friend, right? Supports in wrong also sometimes and rights always, who motivates, who inspires, who supports in each and everything. Right या wrong में अभी हम नहीं जाएंगे. तो ये दो definition हो गई friends and parents की. Okay. Now, parents doesn't mean that you need to be strict. What is important that you as a parent create some ground rules for the family. So when you create a ground rules from the family, that applies to you as a parent and it applies to the child as well. Okay. Oh, this so is you, such a you nice are, point. Yeah. Yes. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे रूल्स सिर्फ बच्चों पे ही अप्लाई करें. पहले अपने Absolutely. रूल्स को खुद अपना के दिखाएं हम अपने बच्चों को, और फिर उनसे Absolutely. एक्सपेक्ट करें कि वो करें उस चीज को. वेरी नाइस. या राइट. Absolutely. So create some ground rules for the family, जबकि सबको ये लागू पड़ता है. And friends क्यों कि जब भी आपका बच्चा आपके साथ बात करे, आप थोड़ा कभी सपोर्ट कर लो. Say for example, आपका बच्चा आके बोले आपको कि I couldn't perform in the race today, or I couldn't have good marks in the test, और आज तो पता है मैंने एक सिगरेट का मम्मा पफ एक टेस्ट कर लिया मैंने. Okay. So now the thing is that if you react, he will do it n number of times, but he will not come and share with you. So if you want that your child keeps on sharing with you, what you can do is, अच्छा कैसा लगा? How did you feel? What made you do this? अच्छा पता है मैंने भी एज में किया था, बट पता है मेरे पेरेंट्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई थी मुझे कि अगर आप सिगरेट लेते हो तो उसके साथ प्रॉज एंड कॉन्स एसोसिएटेड है. मैं तुमसे शेयर करना चाहूंगी कि इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड क्या है इस चीज के. और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं ज्यादा टाइम उसको नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ को इफेक्ट होगा. बस वहीं पे डाल दो. बट देयर आर मेनी पेरेंट्स कि वो बार बार जाके पूछेंगे तूने सिगरेट लिया क्या आज, तूने वापस टेस्ट किया क्या. Now whenever you are talking more, I mean you are asking more, there are two things. It shows that you're not trusting your child. Second, you're not trusting your upbringing, right? And third thing, when you don't trust your child is never going to trust you. ठीक है. So the gap is going to increase. It's widening day by day. So it's a better that आप शक ना करो. Probably आपको स्मेल आती है, क्या कुछ आप देखे हो, तो बात कर लो. Open communication is much needed rather than distrusting your child or creating a माहौल that वो तू मैं kind of हो जाए, because that's going to spoil a relation. And these days, when the world is turning towards AI, right? Children, it's important that we keep bonding with our children on. We teach them empathy and we make them emotionally fit. Sorry, Riddhi, I never got you. AI is AI? So when the world is moving towards AI, total world of artificial intelligence हो रही है आजकल, correct? Everything is artificial intelligence. World is moving towards it.
तो अगर हमने बच्चों में एम्पैथी या हमने इनको इमोशनली फिट नहीं किया है, द चिल्ड्रन विल बी वेरी डिसोरिएंटेड. उनको बहुत कंफ्यूजन्स लाइफ में आने वाले हैं और इनको ये नहीं समझ आने वाला है कि मेरा अस्तित्व क्या है, वर्ल्ड कहाँ जा रहा है और मुझे क्या करना है. Then their patience level, their self connect, mind body connect doesn't happen, and that's where there are a lot of things we see these days with teenagers happens. Yes. So there are people so there are cases when they are highly by 16, 17, they are influencers. They are well known in the college, they're well known in the social media, but they tend to do something which is not appropriate because they don't know where their life is going and they're overwhelmed with things. Right? So it is very important that you keep them grounded, be there for them, and they should be aware that there are people, if I do something wrong, I have people to fall back on. Yes. So that both देना बहुत जरूरी है. Yes. I feel रिद्धि, ये आपने जो लास्ट में बोला ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड समवेयर अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी भी देखूं तो मैंने इतने घोटाले किए हुए हैं जिंदगी में एज अ टीनेजर, बिकॉज वी ऑल हैव हैड आवर पाथ्स, राइट? आई हैव बीन अ नॉटी किड ऑलवेज, एंड लेकिन मुझे कभी भी घर वापस आने में डर नहीं लगता था. कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं घर जाऊं या ना जाऊं या मैं कुछ कर लूं अपने साथ, बिकॉज ऑफ दैट शेम कि मुझे अपने पेरेंट्स को फेस करना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या बोलेंगे किसी चीज के बारे में. बिकॉज माई as you said, my parents had been strict, they had been disciplined, because to mend a child like me, it's a big task, I feel. लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे एक बात बहुत अच्छे से रियलाइज कराई, जो कि मैं अपनी क्वींस को भी कहूंगी, कि जितनी भी बड़ी गलती हो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठे हैं, तुम आके बस चुपचाप हमें अपनी गलती बता दो, एंड डांट पड़ेगी, इट्स ओके, मार भी पड़ सकती है, इट्स फाइन, बट अल्टीमेटली वी आर योर सपोर्टर्स, और हम तुम्हें कैसे भी करके उस सूप से बाहर निकाल लेंगे. सो डोंट वरी, योर फैमिली इज देयर फॉर यू. So I think this is the best feeling, the best kind of security that we can ever give to our kids. Absolutely, absolutely. Now the second question, rather the next question, it's a very tricky one, and somehow I feel the need of discussing it. मैं सोच रही थी तुम्हें personally call करने का and पूछने का, इससे अच्छा we'll discuss here. Now Riddhi, I've got 2 sons in the family, है ना? ऐसे मेरी तरह बहुत सारी families हैं जहां पर मदर के अलावा और कोई गर्ल फिगर होता ही नहीं है फैमिली के अंदर, है ना? सो माई सन्स, ऑल्दो दे आर यंग, द एल्डर वन इज 7, द यंगर वन इज 3.5, बट still I can see the inquisitivity in their eyes when they see me in shorts, when they see me in revealing clothes, sometimes in my night suits or night dresses, या कभी उनको ऐसे लगता है कि मेरे कुछ the underclothes कुछ हैं, कुछ बाहर रखे रह गए हैं, कपड़े धो के आए हैं, वो अंडर क्लोथ्स को देखते हैं कि अच्छा मम्मा ये सब पहनती हैं, सो दे हैव दैट काइंड ऑफ इनक्विजिटिविटी. आई फील कि मेरे क्वींस के साथ भी ऐसा बहुत होता होगा कि घर के जो लड़के हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा ऑपोजिट जेंडर को लेके और उनकी बॉडीज को लेके एक इनक्विजिटिविटी होती है, जो मैंने गर्ल चाइल्ड में फिर भी कम देखी है, लेकिन बॉय चाइल्ड में इट्स रियली क्वाइट प्रोमिनेंटली सीन. तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए अपने परिवार के लड़कों के साथ बचपन से ही, कि उनकी ये इनक्विजिटिविटी आगे जाके हार्मफुल ना हो जाए, एक हार्मफुल एंजाइटी में कन्वर्ट ना हो जाए, जो कि लेटर ऑन उनको ये जो बड़े बड़े हादसे होते हैं विद गर्ल्स. आई फील दैट वी एज मदर्स वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम बचपन से ही अपने लड़कों को एक लेवल ऑफ एक्सपोजर देंगे, उन्हें ये समझाएंगे कि तुम्हारी और हमारी बॉडी में कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, एंड एक औरत की बॉडी को इतना बड़ा डिस्कवरी करने का काम नहीं होता है. सो रिलैक्स एंड चिल. तो आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह डील कर सकते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ. तो वो कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करें यंग एज से ही अपने बॉयज को? It is very important, Shivangi, that a boy child, or I might address it as children, very important that a parent makes a child understand to accept his or her body. ठीक है? जब भी हमारा बच्चा छोटा होता है तो we constantly say it be either gender. एक तो हम प्राइवेट पार्ट्स को दूसरा नाम देते हैं,
सो बच्चों को वो करेक्ट नाम ही नहीं पता होता है. कभी भी आगे जाके कुछ भी कंफ्यूजन होता है, अब्यूज होता है, द पेरेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब्यूज कहाँ हुआ है. कमिंग बैक टू द राइट बॉडी पार्ट्स, यू नीड टू एक्सप्लेन. Second thing, what happens is that you need to teach your child to accept body. Okay. And that comes from the mother. So now imagine हम छोटे बच्चे को नहला रहे हैं. Okay. हम कई बार, मैं कितनी सारी मम्मीज को देख चुकी हूँ कि वो बार बार टोकेंगे, अच्छा फटाफट से जेनिटल्स साफ कर लेंगे या चेस्ट साफ कर लेंगे. ओके. या जल्दी भी अगर बच्चा नेकेड है, अच्छा जल्दी पहनने, you know, wear your shorts, you can't be like this. So you're making the child very conscious. Okay. And you're passing on a message that this is something which is wrong. Okay. And it is not you're not making them understand that this is your body, but you have to make them understand that accept your body however it is. And that's where, when you stop reacting as a mom about the body parts of that child, that where the child will start accepting the body. Okay, कि ये it's a part of my body. Now when you want your child to wear shorts, if the child is naked, right, to not to show or keep your genitals open, you need to say there are some private parts जिसको हम ढक के रखते हैं because soft है, और वो टच अगर कोई ने किया तो you know आपको शायद अच्छा ना लगे. मुझे नहीं लगता था, तो वो हम उसको ढक के रखते हैं. That is how we explain them about the body parts, specifically about the genitals. Okay. So instead of creating a tension or a stress wala thing, it's better that you explain that why it is supposed to be covered. Okay. और अगर आप ये समझाना शुरू करोगे, they will understand. Secondly, it is very important कि from 3 years of age group, you start teaching a child acceptance and consent. Okay. That's where a bad touch and good touch comes into picture, right? So when you have to say that genitals aap samjha rahe ho, that is chest or maybe the vagina or maybe the penis, that you need to make the child understand that would you like somebody touching? Right? This is private part, and I'm sure that you wouldn't like somebody touching. So it is touched by you because it is your body part. But you are not supposed to allow somebody touching it. Okay. There have been times, I remember my little one, when I was teaching him good touch and bad touch, he came back and told me, you are giving me a bad touch, because while he was walking na, that chotu sa bum dikha, to maine usko aise hi jhas kiya. And he said, Mama, you're giving me a bad touch. Yes. Okay. Yes. So I said, okay, I'm so sorry. Yeah. Right. So I had to take care that when I'm explaining, I will not do it. Yes. Okay. So very important कि हम consent and acceptance, ये दो चीज बच्चों को बचपन से समझाए. Right. अपने बॉडी को एक्सेप्ट करो, और किसी को टच करना है तो आपकी कंसेंट के बिना वो बॉडी पार्ट टच करना नहीं है. Right. Right. And third important thing, very important, is that just don't make them understand that this is a good touch or this is a bad touch, this is a private part. But if somebody touches and if you don't like it, what are you supposed to do? That is also what you need to teach a child. Okay. Right? Wow. So acceptance, consent, and what is the way out to it? Like if somebody is touching, what is the way out to it? That is what you have to, explain a child. एक छोटा सा केस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम जब इसमें मिस कर जाते हैं, उसकी रिपोर्केशंस बहुत साल के बाद भी आ सकती हैं. So I had a very good friend of mine, very good friend, and it's like kind of around 7 years पहले की बात है. तो her husband is a very good friend of mine. So this lady's husband said that, Riddhi, you only can help us out in this. Yeah, they were newly married, and in 6 months they had no sexual relationship. Okay, so and this guy was really considerate, helping the lady to accept, and wonderful life they had, but they had no sexual physical relationship. Then one day this guy came to me and said, Riddhi, I really need your help because mera bachpan ka dost tha wo. So I said, but I don't deal with adults. He said that it's only you who can help because you are a friend to me, right? And you will understand my wife. So after when I started probing very friendly तरीके से, जब मैंने उनके घर पे जाना शुरू किया, फिर एक बार ऑफिस भी आए लोग, जब बात करना शुरू किया, this lady was not comfortable her husband touching her breast. The reason being,
somewhere when she was very young, uh, her mother's brother must have constantly touched her breast and abused. She was 6.5 somewhere, and this had happened. The repercussion was this many years, and she saw that ये जो उसकी मम्मी थी और ये भाई था, दोनों दो ही जन थे, और मम्मी was very attached. The lady never got a non-judgmental space to talk to the mother. Yeah. Right? Okay. And she did try that, मामा मुझे कल ये करे था, तू चुप हो जा, हाँ कुछ नहीं, मामा को मैं बोल दूंगी. But that was in her mind. Okay, and mama kept on doing it because mummy never found a reason or a way out to explain mama. And because of that, the lady was not comfortable with any men's touch in her life. So it goes a long Right? way. Yeah, so repercussions बहुत सालों के बाद भी आ सकते हैं. तो बहुत जरूरी है कि consent, acceptance and the right way of dealing with it is explained to a child. This is a very, very important point, Queens, which Riddhi has mentioned, कि हम जो उनको समझा रहे हैं वो हम उनको करके भी दिखाएं. जैसे रिद्धि ने अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बताया, इवन आई कैन रिलेट सो मच. मेरा छोटा वाला है, वो कई बार कुछ क्यूट सा पहना होता है, हम उसकी बम पे कुछ कुछ ऐसे ही वी जस्ट पैट हियर एंड देयर, कभी चीक्स खींच दिए, कभी ऐसे पकड़ के उसको जल्दी से किस कर दिया, है ना. सो वी नेवर आस्क फॉर कंसेंट. हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है कि वी आर सपोज टू फर्स्ट आस्क यू दैट कैन आई प्लीज किस यू, आई एम फीलिंग लाइक किसिंग यू. इट्स सो इम्पोर्टेंट. Very important. वही चीज उन तक आगे पहुंचती है, चाहे वो उसे पसंद करते हो. ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है फिजिकल टच अपने पेरेंट्स का, बट स्टिल उनको भी यही समझ में आ रहा है कि ठीक है, मतलब जो आपको पसंद आए, जो आपको क्यूट लगे, प्यारा लगे, उसको पकड़ो और किस कर लो. है ना. Like there is no need to ask for anyone's consent. We are actually in a way giving that to them. So that's a very, very nice point, Riddhi. Very important. Thank you so much. Now the Pleasure. next question. Are we comfortable, Riddhi? Can we go on asking questions? Yeah? Yes, absolutely. So next question बहुत ही अजीब सा था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बहुत लोगों के घर में ऐसा होता होगा रिद्धि, बिकॉज हम लोग सब मिडिल क्लासेस हैं और हमारे पास कोई ऐसे बड़े बड़े घर नहीं होते हैं कि सब बच्चों के पास अलग अलग कमरे हों. मैक्सिमम हाउसेस like we share rooms with our kids. So there has been a case or two, like many a times queens have shared कि उनके बच्चों ने उनको और उनके हस्बैंड्स को किसी ना किसी एक फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप में देख लिया है. Like maybe when they are kissing together, or maybe when they are just hugging or making love maybe, and the kids, they just got up and they saw the parents in that situation. And the mothers felt so embarrassed. And कई बार बच्चे बहुत बहुत दिनों के लिए मॉम से बात नहीं करते हैं. कई बार वो उनको कल्प्रिट ठहराते हैं, अपनी मदर्स को स्पेशली कल्प्रिट ठहराते हैं कि आपकी गलती है, मतलब यू आर समवेयर यू आर नॉट अ गुड वुमन बिकॉज आप इस तरह से पाए गए. And maybe especially the boys of the family, they keep their mothers at that pedestal, that mom, mother, माँ, है ना. वो उन्हें देख नहीं सकते हैं एक नॉर्मल वुमन की तरह to be engaged with their fathers. So ऐसे टाइम पे राधा मैं पूछूंगी रिद्धि कि क्या है सही टाइम अपने बच्चों को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करने का कि ये एक बहुत ही नॉर्मल रिलेशनशिप है मैन एंड वुमन का जो आपके ममा एंड पापा शेयर कर रहे हैं, एंड इसी रिलेशनशिप की वजह से तुम लोग आए हो इस दुनिया में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ लव रिलेशनशिप. हाउ टू एक्सप्लेन इट टू आवर किड्स एंड when is the right time, how to go ahead with it, and how to come out of such an embarrassing situation if ever it happens to us. So first and foremost is, if the child is in the room, there should be nothing, I mean, no physical relationship has to be done. That parents has to take care of, because you never know that how does it impact a child. Yeah. Okay. But it's also important that a normal hug, family hug, wo sab aap karo, so that the child understands that my father and mother give a hug to each other and they are one, they are a couple.
वो मैसेज डालना बहुत जरूरी है. You can start by while the child starts walking is the time when you start having a family hug. Okay, so a father, a mother, and children, they together have a family hug. Just a small example again from my own life, like morning before my husband leaves. Okay, while it was not this pandemic thing, if my child is at home and my husband has just a habit of giving me a hug, okay, so my little one will stop, come back from the lift, have a family hug, and both of them will leave, right? Okay. So that is the system which I have started, and that is making things very easy. So kabhi if your husband or if a wife might touch you as a spouse, right, that will not be taken, oh, aisa kiya, wo nahi aayega impact. Okay, because you know that they are couple and they are with a family, right? Yeah, right. Now next important thing is, छोटे बच्चे रहते हैं, like around 3 years, 5 years, there have been times that the child has considered father as a demon because the mother was kind of, while in the act of sex, like getting physical intimacy, she was making some sounds and the child felt that my father is harming my mom. He's hurting her. Right. So that is where you need to take care that immediately aap na karo usko address, but wear your clothes, go to the child and ask. And in fact, just tell the child that, something, that was a way of, Papa was not hurting me. It was just that we were together, right? Or mere muh se aaya hai. But then that time, that's not the time you address what sex is, because what bahut chote bacche hain, right? But it is important that usi time, if the child is 5 and a half, okay, you can always initiate that it's an act of a mama and papa. So your mom and dad together, we were together, and you can always initiate the talk of where the babies come from. Okay, so usko associate kar sakte ho, albeit age appropriate. So 5 and 6 years is the age where you talk about that. Okay, mama has a baby bag, and this way papa and mama together create and make a baby. So that's where you start, and mama feeds the child in the baby bag. When you are proper, you're grown and you are healthy, that's where a doctor helps us to remove you. That's how you are here with us. Okay, so usko leke chalna hai. Now थोड़े बहुत अगर आपके बच्चे 9 साल से ऊपर है, 9-10 साल से ऊपर है, and if they have seen you doing it, this is certainly not correct. But अगर देख ही लिया है, they will not feel that this is एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं. They are not going to feel that. But they will not come and ask you even. They will not discuss. So it's your responsibility to sit with your child, explain the child about what is physical intimacy and all by 10, 11. Okay? Not a proper physical relationship, but you can always explain. Probably you can draw and explain what is a human, how does baby come into, what's the process of creating a baby, and what are genitals, and what is the woman genitals, how does it look like, what is a man genital, how does it look like, and what happens. A little bit you can always start sharing, right? By even 9 and 10, you can start talking to girls about menstruation as well. Because these days by 11, a girl starts having her periods, right? So it's very important that absolutely. So it's very important that you start explaining the child about it. Now जो ये बीच वाला जो एज ग्रुप है ना, जैसे 5 to 8 years, right? अगर इन्होंने आपको देखा है, so yes, take that opportunity to explain about that, this is something wherein this is a way of love making between a couple, that is a mother and father of yours, like a husband and wife, right? And this is how we create babies. This is how we created you also. But let me explain how the thing is. That's how I had and pura isko deviate karo to a child, like, how a child is made in the tummy and how you as a mother took care of the child. Okay. So age appropriate समझाना बहुत जरूरी है. age से पहले कुछ नहीं. Also it is important कि अगर आपके बच्चों ने ये देख लिया है, तो ऐसा नहीं उनको लगना चाहिए that it's okay that whomever I like. So message should not be put up that I like your father and hence I had this.
I Hmm. physically I was intimate with your Right. father, or Right. to the other person, because the child should not get a message that whoever That I it's like I can casual get. thing. ये Absolutely, कैजुअल I नहीं लगना चाहिए उसको. nahi Okay. nahi. So it's not that Hmm. whoever I like I can get in physical relationship with the person. Yes. Okay, Yes. it has to Yes. be consensual, it has to be allowed, it has to be accepted, and you are in a Hmm. relationship, then you Yeah. go for it. So this all message has to be put across in to your child. Very important for a Wonderful. couple to do that. वंडरफुल. सो रिद्धि का कहना है क्वींस, जैसे आपने सुना कि हमें भागना नहीं है सिचुएशन से, जैसे कि हम यूजुअली करते हैं. जैसे कि मेरी क्वींस ने भी मुझसे शेयर करते हुए बताया था कि वो चुप हो जाती हैं, वो सबमिसिव हो जाती हैं, अपने बच्चे के सामने शर्माना शुरू कर देती हैं. दे डोंट नो हाउ टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल मदर सन रिलेशनशिप और द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. सो इट्स बेटर, इट्स बेस्ट रादर टू टॉक टू योर चाइल्ड. आप एज अप्रोप्रिएट, जैसे रिद्धि ने बताया, आप बात कीजिए अपने बच्चे से. एंड रिद्धि, फॉर दैट मैटर, आई स्टिल रिमेम्बर I was in ninth standard and I was given a book on sex education by my school. And I sat along with my mom. My mom is a botanist. She is a very, very friendly, she has been a friendly mom. But even I remember that she was pretty much hesitant in explaining me कि क्या था सब कुछ. लेकिन स्टिल आई फेल्ट लॉट मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर डिस्कसिंग इट विद माई मॉम. एंड मुझे समझ आई कि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड ये सभी के जीवन में होना है. कभी ना कभी सभी को ये करने का मौका मिलेगा, एंड ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ का. बट Absolutely. एज रिद्धि मेंशन्ड, आपको इसे बहुत कैजुअल भी नहीं दिखाना है. आपको इसे बार बार इस बात पे एम्फसाइज करना होगा कि ये एक मदर एंड फादर के बीच का रिलेशनशिप है, so that the kids get a very strong idea that it's between two people who are into a strong relationship. So that's Absolutely. very nice answer. Thank you so much, Riddhi. And Pleasure. Riddhi, few of the queens, they wanted to know that when we have two kids, and somehow the younger one feels very pampered, and वो बहुत snuggy होता है, हर हमेशा घुस जाता है बीच में. लेकिन जो elder one है, he feels a little insecure and left out, है ना. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कैसे अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छा हम लोग फील कराएं, कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखें? या nowadays we all are so working, like we all are working moms, like you and me and many other queens, we are working from home. Yet अगर हम लोग घर में भी हैं, होम मेकर्स भी हैं हम लोग, तो भी हमारे पास एक वो जो क्यूटी फैक्टर, क्वालिटी टाइम फैक्टर, वो हम कैसे जनरेट करें अपने बच्चों के साथ, ताकि एक हमेशा के लिए एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बन जाए उनके साथ. So any How suggestions on lovely. these? Yeah. Yes. So first, we talk about two children. Okay. Hmm. So Hmm. it is very important for a lady that when she is pregnant with the second child to involve the elder one in the process. Okay. Hmm. So all that 9 months, the elder one has to be mentally made aware that Hmm. the child is, the second child is going to be there in the family. A second, somebody who looks up to you as a brother and Hmm. or a sister, whoever it is, and that Right. involvement rehna chahiye. Right. Secondly, when the second child, a lady delivers a second child, involve the elder one to the T in upbringing of the second one. Okay, right from the choice to be made for the clothes or the room decor or the gifts and everything, involve. And Yeah. also ensure that if you are getting a small soft toy for the younger one, the same you get for the elder one. भले Okay. बच्चा बड़ा हो, right? Hmm. Even if he's 7 and 8 years, उसके लिए सेम लेके आओ till the time the child tells you that hey mama I'm old enough to play with this. Okay, आप Okay. छोटू के लिए बाय करो, but Right. आपका तरीका यही रहना चाहिए कि आप दोनों के लिए सब कुछ सेम लाओ. Okay, Right. say it be t-shirts, say it be shirts, whatever it Hmm. is, and that's how Right. you make the child feel that you both are important for me. Secondly, Hmm. when you have a second child, ensure that you don't give your 24/7 to the second child. वो छोटा है, वो नहीं समझ रहा है बच्चा. ओके, तो आपको उसको सुला के आपको ज्यादा टाइम आपके बड़े बच्चे को चाहिए होता है, बिकॉज वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आने वाली है.
Okay, Right, so you have to right. ensure that आप छोटा जैसे ही सो जाए आपका बच्चा, you need to spend quality time with your child. Now, what is quality time? Yeah, there's a there's a definition for quality time, and people like have kind of tweaked it a lot. Quality Okay. time is not quantity time. It's not hours and hours you spend. Hmm, Quality hmm. time is you be with your child जहां पे आपका स्पाउस, आपका दूसरा बच्चा, आपका मोबाइल फोन, टीवी, कुकिंग कुछ भी ना हो, बस आप और आपका बच्चा हो. Say क्या if even बात है. 30 minutes is okay, Okay. but that is the quality time you need to have with your child. There where you Okay. talk, probably you play a game, probably you just do a gratitude journal, और probably आप कुछ गार्डनिंग करो, या आप दोनों बैठ के चाय पियो, कॉफी पियो, कोको पियो, कुछ भी पियो, बट साथ में रहो. Right? That is quality Wow. time. वाओ Right? वंडरफुल And रिद्धि. आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को भी क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन पता थी. ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. प्लीज प्लीज कंटिन्यू रिद्धि. so that is how you spend time, and that's where when you start spending quality time with the elder one, you will get to understand कि उसकी insecurities क्या है, and that's where you will start addressing it. Unless and until you spend quality time, you will not understand what are the insecurities, popping up in your elder one's mind, and you will never be able to do it. And then that sibling rivalry will start. जबकि आपका बच्चा 9-10 साल का बड़ा बच्चा होना शुरू हो जाएगा, राइट? ही विल टेंड टू हार्म द यंगर वन, और कभी बाल पुल कर लिए, या कभी बोल दिया दैट मम्मा यू लव द यंगर वन मोस्ट रादर मोर देन मी, और प्रोबेबली आप तो उसी को देखोगे, मुझे नहीं देखोगे. सो दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस विल स्टार्ट कमिंग अप बिकॉज वी हैव राइट. नॉट एड्रेस दिस इनसिक्योरिटीज. ओके. वाओ वाओ. और जब एक चीज बहुत जानना जरूरी है, दैट ये सब आप करोगे तब भी आपका जो बड़ा बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं उसको एस्टीम थोड़ा लो होने वाला है. यू हैव टू एंश्योर दैट आप उसको एक्नोलेज करो, उसकी जो भी चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, एक्नोलेज करिए, उसको एप्रिशिएट करिए, और उसको सपोर्ट करिए. More than the younger one for few years, because he will need you more than the younger one. Younger one will start growing up on his own along with the elder one, but the elder one will need more support than the younger one. Okay? एक दो साल अगर आपने दे दिया, then no looking back, they will be best friends for life. But that's a responsibility of parents to create that bonding. और दूसरी important चीज, कभी ऐसा भी होने वाला है कि आपके दो बच्चे बहुत एक दूसरे को, they'll get into arguments, they'll fight for unnecessary things. Never get into their fights. Never ever get into their fights. Let them fight. They are creating a relationship, and they know each other. They know their brother, sister, two brothers, two sisters. Let them sort out on their own. And when they come to you with a complaint, never say you are right, or you are wrong. Never give judgment. You can say that, hey, let's talk about it. Okay? Let me help you to solve it. This is something which is correct, and this is something which I would appreciate, and this is something which I will not appreciate. Okay? Now, आप दोनों right हो, आप दोनों को पता है कि किस चीज से हुआ है प्रॉब्लम, आप दोनों मेरे सामने सॉल्व करिए. Okay, so never take sides, but make them sit together and help them to understand that आगे जाके कभी भी dispute होता है, they know how to talk it out. They know how to solve mutually rather than getting outsiders, amidst their talk or fights or anything. Absolutely. So that is where parents have to teach this. Wow. Thank you so much, Riddhi. It's such an insight. It's such a wonderful insight, rather. मुझे आई एम श्योर कि क्वींस को भी आपके ओपिनियंस एंड एडवाइसेस सुन के बहुत अच्छा लगा होगा. देयर स्टिल सो मच टू टॉक, but I feel we're running out of time, and we'll catch up on sometime later, but very soon, because you have given us such great insights. As a mother, I can personally feel कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऐसे notions हमारे तोड़े हैं, especially जो लास्ट में आपने बताया. हम लोग नहीं तो एज मदर्स हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, छोटे वाले को ज्यादा केयर चाहिए, छोटे वाले को ज्यादा सपोर्ट चाहिए, छोटे वाले के पास मेरा होना जरूरी है ना. और उस चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं बड़े वाले से दूर होते चले जाते हैं. आई थिंक बहुत सारी क्वींस आपकी इन बातों से रिलेट करेंगी और सीखने को मिला है. थैंक यू सो मच रिद्धि. एंड बिफोर यू लीव, जस्ट वन लास्ट, आपका वो जो टोटका जो आपने मुझे स्पेशली बताया था अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, if you can just, जल्दी से share it with my queens,
दैट वो रात को सोते टाइम जो आपने मुझे बताया था, एंड इट वर्कड आउट वंडरफुली क्वींस। मेरे बच्चे में विद इन 15 डेज चेंज आ गया था। सो मैं चाहती हूँ कि बाकी क्वींस को भी मदद मिले। सो प्लीज अ क्विक रिकैप रिद्धि। I'll do that. So, few sentences which you need to talk to your child before the child sleeps, only to be used if you feel that your child is lacking confidence. हर चीज में ये नहीं होता है, हर चीज के लिए different sentences बोले जाते हैं, जिसको हम affirmations बोलते हैं. And these affirmations are supposed to be used spoken when the child is slept but not got into a deep sleep. That time is probably some seconds you get, and that's where you need to target, because that's where you're targeting the subconscious mind. So few sentences you need to talk about. You're a very calm child. So say the child's name and say, you're a very calm child. You're a very confident child. You're a very loving child. And Papa loves you. Mama loves you. Okay. And if you have an elder brother, take the elder child's name as well. And that too also you can say that he or she loves you. नाम दे के बात करिए, because वो एक bonding बढ़ाता है. Subconscious mind starts accepting that this is something which it's a family and I can trust them. I feel secure. It's a non-judgmental space and I'm good here. Right? So this is my family. That's what a subconscious mind starts accepting, and that's how the child starts accepting and starts behaving confidently. यस यस। एंड रिद्धि, आई शुड टेल यू कि वीर ने इस टेक्निक को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। क्वींस वीर जो है मेरा एल्डर सन, ही स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर इन हिज न्यू स्कूल एनवायरनमेंट जब उसका स्कूल चेंज हुआ। एंड रिद्धि ने बिल्कुल इसी तरीके से मुझे गाइड किया, एंड मैंने रात को जैसे ही वो सोता था एंड बिफोर ही यूज्ड टू गेट इनटू वेरी डीप स्लीप, मैं उसे बोलती थी कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को पसंद कर रहा है, अपने नए स्कूल को पसंद कर रहा है। एंड ममा लव्स वीर, पापा लव्स वीर, एंड मुकू लव्स वीर, मैं सबका नाम लेती थी। एंड दिस इज हाउ धीरे 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 करके 15 दिन में उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया। नाउ ही लव्स हिज स्कूल, रिद्धि। सो ऑल थैंक्स टू Wow. यू। Wow. एंड Wow. Thank you. yeah, so Riddhi, again, heartfelt thanks from all our queens. आपने शायद देखे होंगे साथ साथ ढेरों कमेंट्स आए हैं, and queens are really thanking you with their hearts out. And Thank you, आपको Shivangi. अभी भी अगर किसी को रिद्धि को कांटेक्ट करना है, प्लीज फील फ्री। रिद्धि का इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर टैग रहेगा इस वीडियो पर, एंड फेसबुक पर रिद्धि का पेज है, रिन्स एकेडमी का पेज है, लाजा इज अगेन एन इनिशिएटिव बाय रिद्धि. So you can just go to any of the pages. I'll tag everything here, and you can contact Riddhi and consult her professionally also for personal guidance and personal counselings. So thank you so Thank you, much, Riddhi. Shivangi. Thank Thank you you for all the having me here. queens for Thank joining you. us. Bye bye. Thank you. Bye bye.